हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को बताऊंगा मैं अबाउट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सेकेंड, दैट इज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर इफिशिएंट वर्किंग ऑफ ए सीवर इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट मिनिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ये होना चाहिए। तो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन है, बॉटम ओपनिंग 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर इन द स्टैंडिंग बैफल वॉल आर प्रोवाइडेड। कितना प्रोवाइड करेंगे हम लोग ओपनिंग को? 22.5 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। फॉर ड्रेनेज पाइप्स इन बिल्डिंग द टेस्ट अप्लाइड बिफोर पुटिंग देम टू यूज इज, व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट? इट इज स्मोक टेस्ट। नेक्स्ट है, no treatment of the sewage is given if dilution factor is more than 500 से ज़्यादा होने से no treatment होगा। Which of the following pump is used to pump sewage solid with liquid sewage without clogging the pump? The name of that pump is centrifugal pump. Acid regression stage of sludge digestion at a temperature 21 degrees centigrade extends over the period of 90 days. Next question is, the coagulant which is generally not used for treating the sewage is, एलाम यूज़ करते हैं हम लोग कोएगुलेंट वाटर सप्लाई के लिए, सीवेज के लिए नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ वेजिटेबल वेस्ट एंड नाइट सॉल्ट ऑल्टरनेटिवली पाइल्ड ओवर द ग्राउंड टू फॉर्म ए वुंड, द नेम ऑफ दैट वुंड इज कॉल्ड विंड्रो। इफ़ द फ्लेम ऑफ ए माइनर्स सेफ्टी लैम्प अगर क्या हो जाएगी, वो उसमें आग लग जाएगा, एक्सप्लोजन लग जाएगा, द नेम ऑफ द गैस प्रेजेंट इज मीथेन गैस। नेक्स्ट है, द गैस विच में कॉज एक्सप्लोजन इन शीवर इज मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, द वाटर सप्लाई पाइप से कैरी प्योर वाटर फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स। बिल्कुल सही, ये करेक्ट आंसर है, द वाटर सप्लाई पाइप्स कैरी प्योर वाटर फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स। नेक्स्ट इनकरेक्ट है, द गैसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन स्लाइड डाइजेशन प्रोसेस कंटेन 75% मीथेन। ये सही है लेकिन ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लार्जर देन 600 माइक्रॉन या लार्जर देन 0.06 mm इन सेटलिंग टेम्परेचर डेप्थ 2.4 in 0.33 per second. The detention period recommended for the tank is, the detention period will be 2 hours. Incorrect statement from the following. The man entering the manhole should be advised to smoke in the shower. This is not advisable. Next है, ये द डिस्चार्ज की वैल्यू होगा 28.88 क्यूमैक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कितना होगा? द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द 0.75 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, पीएच वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, द एफिशिएंसी ऑफ सर्टेन ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ पीएच वैल्यू। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ना नॉर्मल वैल्यू ऑफ फ्लो रेट फॉर सेडिमेंट यूजिंग कोएगुलेंट, मतलब सेडिमेंटेशन टैंक यूजिंग कोएगुलेंट का मतलब है रैपिड फिल्ट्रेशन के लिए, मतलब रैपिड सेडिमेंटेशन के लिए। तो हम लोग यूज़ करेंगे 50,000 to 60,000 लीटर्स पर स्क्वायर मीटर पर डे। विदाउट यूजिंग कोएगुलेंट होगा तो 40,000 to 50,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द ड्रेनेज एरिया ऑफ इफ द ड्रेनेज एरिया ऑफ ए टाउन इज 12 हेक्टेयर P, the maximum runoff is equal to the, कितना होगा इसमें? the maximum runoff will be equal to, आंसर हो जाएगी 0.15 क्यूमैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीवर that unholds the sewage at the point of the treatment, that sewer, उस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? that type of sewers are called outfall sewer. एट द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट डायरेक्ट फ्लो करेगा, आउटफॉल सीवर। नेक्स्ट है, फॉर ए ग्रिड चैम्बर द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर एंड डिटेंशन पीरियड इज 2 मिनट। द लेंथ ऑफ द टैंक इज 24
मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई वेदर फ्लो इज वाटर सप्लाई एलोवेंस पर कैपिटा। नेक्स्ट है इनकरेक्ट, द ओल्ड convergence system was definitely better than the water carried sewerage system. This one is incorrect. Next है 18 plus, the correct answer will be 18 plus root p divided by the 4 plus root p cube. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीवर्स कंटेंसेस हाइड्रो, कौन सा गैस होगा अगर ये सेफ्टी लैम्प क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विशेस होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। हाइड्रोलिक मीन रेडियस इज इक्वल टू द एरिया बाय द पेरीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय द वेटेड पेरीमीटर। द डेप्थ ऑफ द इमा 1/3, देन द वैल्यू विल बी पाई डी बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है the brake horsepower of the motor efficiency 60% required for the pump of capacity not to lift of 12 meter is 20 horsepower. Next है at the junction of the sewer, top of both the is none of this. At the junction of the sewer it will be none of this. Traps are the water seals which prevents the entry of the foul gases are called traps. The sewage treatment unit in which anaerobic decomposition of organic matter is used, anaerobic जिसमें हो उसका नाम है इमहोफ टैंक, और कभी कभार इसका आंसर ट्रिकलिंग फिल्टर भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। स्पेशली इमहोफ टैंक होगा जिसमें एनारोबिक होगा प्रोसेस। इफ द डायमीटर ऑफ द सीवर is 150 mm, the gradient required for generating self cleaning velocity is सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी के लिए द ग्रेडियंट कितना होगा, द आंसर विल बी फॉर द 150 द ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज 1 in 100. नेक्स्ट है द सीवर व्हिच रिसीव डिस्चार्ज फ्रॉम टू और मेन सीवर इज कॉल्ड एज ए, such kind of sewer is called as a trunk sewer. Next about the grit and silt of the grit chamber may not be used for concreting. Next question है for treating the sewage of a large city you will recommend a sedimentation tank and an activated sludge treatment process. Imhoff cone is used to measure the settleable solids. Next question है 1000 kg of sewage contains both A and C, that is 0.112 kg in suspension and 0.225 kg in solution. So answer will be both A and option number D. Next question है dilution method of disposing of sewage is not preferred to when does dilution method is of sewage of disposing of sewage is not preferred to when the diluting water is used for water supply near the point of sewage disposal. Next question है if the peak discharge of a storm peak discharge of a storm drain water is expected to exceed 150 cubic, the freeboard to be provided is, कितना freeboard provide किया जाएगा, 100 centimeter. Next question है the reduced levels of the stream consecutive are of real side A and B are 203.575 and 202.475. If the differences of reduced levels is 10 meter, the gradient of the sewer line is 1 in 100 downward. Next question है the organic matter is oxidized by potassium chromate in the presence of sulfuric acid H2SO4. The sludge does not contain waste water from toilets. Next question है in sewers the velocity of flow should not be in the sewers the velocity of flow should not be less than the self cleaning velocity. Next question है in the sewers
The effect of scoring is more on the bottom side. Next question है the sewer which resists sulfide corrosion is lead sewer. Next question है the amount of oxygen consumed by the aerobic bacteria which causes the aerobic biological decomposition of sewage is known as, the amount of that oxygen is known as dissolved oxygen. Next question है water content of sewage is about 9.9%. Next question है skimming tanks are used to remove the grease and oil. Next question है the most efficient cross section of sewer in a combined sewerage system. In the combined it is egg shaped. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कंबाइंड के लिए सबसे इफ़िशियंट होगा एग शेपेड. उसके बाद सेपरेट सिस्टम के लिए सबसे इफ़िशियंट होगा सर्कुलर सेक्शन. उसके बाद ट्रैप्स के लिए हॉर्सशू शेपेड और आउटफॉल सीवर्स के लिए हॉर्सशू शेपेड होगा. आएंगे धीरे धीरे, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको कंफ्यूज करने के लिए कहीं कहीं पे आपको मिलेगा दैट फॉर द कंबाइंड इट इज़ सर्कुलर मिलेगा, लेकिन सर्कुलर गलत है, इट विल बी एग शेपेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूम स्टील पाइप्सेस आर स्टील पाइप्सेस कोटेड फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड विल, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेंटेन एरोबिक बायोलॉजिकल द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कंपोस्ट मस्ट शुड बी अबाउट 60%. सॉरी 60% नहीं है, रुकिए 60% नहीं है. इसका आंसर जो है वो हो जाएगा द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कंपोस्ट मस्ट. तो एरोबिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 55% होगा. करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द लार्जर द साइज इन सीवर मोर वेलोसिटी, द लार्जर द सीवर इन साइज डिपोजिशन विल टेक प्लेस. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द pH वैल्यू ऑफ ए सीवेज इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो फॉर द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द माउथ ऑफ ड्रेन इज इतना. द इनलेट टाइम विल बी 4 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल वेयर फॉर द प्लेन प्राइमरी सेडिमेंटेशन डैम, प्लेन के लिए 40,000 to 50,000 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेप्टिक टैंक इज रॉन्ग. The depth of the tank is kept equal to its width. This statement is wrong. Next है in a trickling filter only biological action is used. In areas where rainy season is limited to a few months, the type of sewerage system is few months. The type of sewerage system is called separate system. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज इन सेप्टिक टैंक इज रिकमेंडेड टू 30 लीटर्स पर पर्सन पर ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइड सीवेज आफ्टर ट्रीटमेंट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है डी इज इक्वल डेप्थ इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ द बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है where light टॉरेंट्स are uniformly distributed, हर पूरा साल में होगा, then we will be using the combined system. Next question है self cleaning velocity is the velocity at which no accumulation remains in the drain. Next question है 5 days BOD is taken at a temperature of 20 degrees centigrade in 5 days. The dissolved oxygen depletion was found to be 8 meter. The BOD of the sewage is, what will be the BOD of the sewage? The BOD of the sewage will be 400 mg per liter. Next question है incorrect. Incorrect is inlets are generally provided in all sewers. This is the wrong option. Next question है a well oxidized sewage contains nitrogen mainly as free ammonia. सॉरी फ्री अमोनिया नहीं होगा, रुकिए फ्री अमोनिया जो है ये सबसे पहले प्रोडक्ट होता है, लेकिन ए वेल ऑक्सीडाइज सीवेज कंटेन्स नाइट्रोजन एज नाइट्रेट.
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्लज इज रिड्यूस फ्रॉम 90 to 80%, हाफ मतलब 10% कम हो गया तो आधा % कम हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ द स्लज इज 50% डिक्रीज. इन अ स्लज टैंक द गैस मेनली प्रोड्यूस्ड इज कौन सी गैस प्रोड्यूस होता है इन द स्लज टैंक? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन है BOD for the first 20 days is generally referred to as all of the above. Next question है if the diameter of the circular upper the overall depth of the new egg-shaped sewer section is 1.625 D. Next question है in the normal condition the period for sludge digestion is normal condition is 30 days. Next question is for evaporation and measurement of cellulose the apparatus used is Imhoff cone. Next question is in trickling filter BOD is reduced to 60 से 80%. 80% का आप लोग याद रखें यार, रीज़न मैं बताऊंगा. 60 से 80%. नेक्स्ट क्वेश्चन है या 75 to 80%. The percentage of sewage discharge is assumed 75 to 80%. Next question है a grid chamber of sewage treatment plants are generally cleaned after कितने दिन के बाद साफ किया जाता है ग्रिड चेम्बर को? आफ्टर एवरी हाफ मंथ 14 days. Maximum possible velocity 1.5 meter is adopted in drains both A and B with bed of rocks and gravel and lined stones. Next question है the average temperature of sewage in India is 20 degrees centigrade. Next question है cowl is provided at the upper end of the ventilating column. Next question is if the discharge of a sewer running as itna the diameter of the sewer is 1.69. Next question है a drop manhole is provided if drop manhole if a कब प्रोवाइड किया जाता है? if a branch sewer joins the main sewer at height level. The use of coarse clean for the disposal of sewers may be dispensed with by using shredder and comminutor by using the both, that is by using comminutor and shredder. It can be dispensed of by using both A and C. Next question, in the sludge activation process aeration is done with an admixture of previously aerated sludge. Next question for detecting the nitrate in sewage the color may be developed by adding phenol disulfuric acid and potassium hydroxide for nitrate, and for nitrite it will be sulfuric acid. Interdistance between ventilating column and sewer line is how much distance? 150 to 300 meter distance. Stone ware pipes are specially suited to pressure pipes. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ रेन इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इमंग सेंटीमीटर पर आवर. इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज सेंटीमीटर पर आवर. इतना सेंटीमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर सेक्शन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्विवेलेंट टू, this one will be equivalent to 1.095. Which one of the following part of human body withstand minimum radiation by ovaries and testes? Next, drop manholes are the manholes having drains at different levels. Next question है the bottom of the sewer inlet chamber of septic tank is provided an outward slope of 1 in 10. Next question है the BOD of the sewage will be 250 ppm. Okay. Next question है primary treatment of sewage consists of removing of
large suspended organic matter. Next question है cement concrete surfaces are only suitable if non-scouring velocity is between 3.5 to 4.5 meter per second. Sorry, if non-scouring velocity is 2.5 to 3 RA meter per second to 3 meter per second is the cement concrete which is suitable if non-scouring velocity is. The most widely used pipe for lifting sewage is centrifugal pump. The next question is gamma W into the R into the S. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटिंग आउट द अलाइनमेंट ऑफ सीआर में स्टार्ट फ्रॉम टेल एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर इंटू 0.11 डी प्लस 0.75 एच डिवाइडेड बाई क्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड एसिटेट टेस्ट इन सीआर मैनुअल इज डन to test the presence of lead acetate is to test the presence of hydrogen sulfide gas. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था. टोटल मैंने आप लोगों को बताया आज की टॉपिक, आज की क्लास में 100 क्वेश्चंस. ठीक है, तो अगर आप लोगों को पसंद आए हो प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.